Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and as usual I've brought for you a very informative and communicative video. Today in this video we are going to learn very communicative sentences which we normally use in our conversation. For instance, जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, और जब तक तुम क्लास ले रहे हो, और इससे पहले कि बिजली चली जाए. Such sentences begin with जैसे ही, जब तक, जब, इससे पहले के या के बाद. These phrases in Urdu are called connecting words or conjunctions in English. For instance, as soon as long as, when, before, or after. Today we will be learning the use of these connecting words in our conversation. So let's start with that. I'm going to tell you how to use these connecting words or conjunctions in your sentences. We always use as soon as long as, or when, before, or after with any sentence in any tense, depending upon the need and requirement of your conversation. Then you add up another sentence to complete the meaning. Let's take an example here. इससे पहले के मेहमान आ जाएं, मासी कमरे की सफाई कर देगी. इससे पहले के. So you can see here there is a list of connecting words on your screens: as soon as long as, when, before, and after. So which connecting word do you think should be used here? Very right, before. So we use before with a sentence of mehman aa jaएं. Before the guests arrive, मासी कमरे की सफाई कर देगी. This sentence belongs to future simple. So we'll use it. The maid will clean up the room. इससे पहले के मेहमान आ जाएं, मासी कमरे की सफाई कर देगी. Before the guests arrive, the maid will clean up the room. The next sentence on your screen is जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन आ गया. जैसे ही के लिए हम as soon as इस्तेमाल करते हैं. मुझे पता चला. This sentence belongs to past simple. I got to know. As soon as I got to know, मैं फौरन आ गया. I came immediately. So you can see here, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जुमला एक स्पेसिफिक टेंस से बिलोंग करता है, जिसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है. मुझे पता चला बिलोंग्स टू पास्ट सिंपल, एंड मैं फौरन आ गया ऑल्सो बिलोंग्स टू पास्ट सिंपल. As soon as I got to know, I came immediately. Next sentence is जब तक तुम क्लास ले रहे हो मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा. जब तक के लिए हम as long as का इस्तेमाल करते हैं. तुम क्लास ले रहे हो, this is present continuous tense. मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, this is future simple sentence. So the sentence becomes as long as you are taking class, I'll wait for you. जब तक तुम क्लास ले रहे हो मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा. As long as you are taking class, I will wait for you. मैं काम से फारिग होने के बाद तुम्हें पिक कर लूंगा. As it appears from the sentence that we have to use after here. The connecting word after will come at the beginning of the sentence. After I get free from work, मैं काम से फारिग होने के बाद, after I get free from work, तुम्हें पिक कर लूंगा. This is future simple sentence. I will pick you. After I get free from work, I'll pick you. जब भी मैं उससे बात करता हूं वो मुंह बनाता है. जब के लिए हम when का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब भी के लिए हम whenever का इस्तेमाल करते हैं. मैं उससे बात करता हूं. This is a repeated action sentence. Present simple. Whenever I talk to him, वो मुंह बनाता है. This is also present simple. He pulls the face. Whenever I talk to him, he pulls face. जैसे ही मैंने फोन उठाया, कॉल कट गई. जैसे ही, as soon as, मैंने फोन उठाया. You can see here, this is past simple sentence. I received the call or I picked up the phone. जैसे ही मैंने फोन उठाया, as soon as I received the call, कॉल कट गई, the call dropped. The next sentence on your screens is जब तक उसने बात की मैं खामोश रहा. As long as he talked, I remained quiet. जब तक उसने बात की
As long as he talked, I remained quiet. मैं खामोश रहा. इस जुमले में दोनों सेंटेंसेस, उसने बात की और मैं खामोश रहा, पास्ट सिंपल से बिलोंग करते हैं, तो हमने उसके लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज सलमान के जाने के बाद मैं सो गया. दिस सिचुएशन ऑल्सो बिलोंग्स टू पास्ट. सलमान के जाने के बाद, आफ्टर सलमान हैड गॉन, मैं सो गया, पास्ट सिंपल, आई स्लेप्ट. यहाँ देख सकते हैं आप कि पहले सलमान गया और उसके बाद मैं सोया, तो हम सलमान हैड गॉन पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं एक ऐसे एक्शन के लिए जो पहले हो चुका था, और उसके बाद सेकेंड एक्शन हुआ विच इज पास्ट सिंपल. आफ्टर सलमान हैड गॉन आई स्लेप्ट. तुम्हारे आने से पहले ही हम नाश्ता कर चुके थे. तुम्हारे आने से पहले, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. हम नाश्ता कर चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. बिफोर यू केम वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट. जब भी मैं तुम्हें कोई काम कहता हूं तुम मना कर देते हो. Whenever I ask you for any piece of work, you refuse. Whenever I ask you for any piece of work, you refuse. इससे पहले कि अंधेरा हो जाए चलो घर वापस चलते हैं. इससे पहले के, before अंधेरा हो जाए, it gets darker. घर चलते हैं, let's return to home. Before it gets darker, let's return to home. जैसे ही मुझे मालूमात मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा. As soon as I get information, I will tell you. जैसे ही, as soon as मुझे मालूमात मिलेगी, फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन as soon as के साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं फॉर फ्यूचर मीनिंग. As soon as I get information, मैं तुम्हें बता दूंगा, फ्यूचर सिंपल, I will tell you. So dear brothers and sisters, I hope you must have understood this topic today. I have introduced 5 different connecting words or conjunctions in this video. मैंने इस वीडियो में 5 connecting words का इस्तेमाल सिखाया आप लोगों को with different sentences and tenses. If you have any query or question, you can ask me in the comments. If you have not subscribed the channel, you must subscribe the channel at first and share this video with your friends and family. We'll meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.